Hello guys, our today's topic is expression for pressure volume work, that is PV work. This work is also known as the work done in isothermal irreversible process. Guys, हमने isothermal process पढ़ा है. Isothermal process में कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट रखते हैं? Temperature, correct ना? So isothermal process is a process where the temperature remains constant and the process carried out by keeping temperature constant only. यानी हम लोग कहेंगे डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो. करेक्ट. डेल्टा टी इक्वल टू जीरो है तो बट ऑब्वियस डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो. इंटरनल एनर्जी ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी चेंज फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम. एंड गाइज हमने पढ़ा है रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है? देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स. Okay, little bit difference between driving and the opposing force, and that's why what happened, that the process goes reverse, means from say work done from system to surrounding or surrounding to system. Understood? So that is called reversible process. Now here we are going to see the irreversible process. मतलब generally once the work is done, okay, it means either gas is expand or compress. इट कैनॉट गोज इन टू द रिवर्स वे. जैसे एक्सपांड हो गया तो रिवर्स नहीं आएगा, मतलब कॉम्प्रेशन नहीं होगा, और कॉम्प्रेस हुआ तो एक्सपांशन नहीं होगा. अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस. सो हियर वी आर गोइंग टू सी द वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस. चलो फिर स्टार्ट करते हैं दैट वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस और एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम पीवी वर्क. Now we are going to consider a certain amount of a gas at constant pressure P. Okay, a gas is there and having a constant pressure P is enclosed in a cylinder, but obviously the cylinder do have a movable and frictionless piston, and that cross section area of the cylinder is A. Okay, देखो, this is the cylinder where the gas is there having a constant pressure P. नीचे एकदम P है वहाँ पे. Okay, that is gaseous pressure and the area of cross section for the cylinder is A. Okay, if you see properly over here in the figure, आपको क्या दिखेगा कि वन इज़ V1, अदर वन इज़ V2. V1 एक्सप्रेस करेगा इनिशियल वॉल्यूम, V2 एक्सप्रेस क्या कर रहा है? फाइनल वॉल्यूम. एंड ऑन द राइट हैंड साइड द D इज़ रिटन. अंडरस्टूड? D क्या है एक्चुअली? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन. आई एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट इज दैट होल डायग्राम इज. हियर द सिलेंडर इज देयर हैविंग अ मूवेबल पिस्टन. नाउ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर. अब गैसियस प्रेशर है P. हियर द गैसियस प्रेशर इज व्हाट? इट इज P. ओके, नाउ इफ द movable piston is pushed towards the upward sides. Movable piston is moving towards the upper side. What will happen? The volume of the gas will expand. Understood? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? और गैस का एक्सपांशन होगा. मीन्स द गैस इज एक्सपांड ओवर हियर. एक पर्टिकुलर प्लेस के बाद पिस्टन का मूवमेंट स्टॉप हो गई, समझ लो V2 की प्लेस पर स्टॉप हो गई. सो हियर द फाइनल वॉल्यूम ऑफ दैट गैस इज V2. अंडरस्टूड? फ्रॉम V1 टू V2 वॉट एवर डिस्प्लेसमेंट शोज बाई द पिस्टन ओनली, दैट इज कॉल्ड D. अंडरस्टूड? फ्रॉम V1 टू V2 जो भी डिस्प्लेसमेंट बता रहा है द पिस्टन, दैट इज कॉल्ड व्हाट? D. अंडरस्टूड? सो दैट इज D, V1, V2. ओके, सो ये है डायग्राम. देखते हैं यहाँ पे. लेट वॉल्यूम ऑफ द गैस इज V1 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T. ओके, वॉल्यूम क्या है? इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज V1 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T. ऑन द एक्सपांशन, ओके, जब एक्सपांशन हुआ गैस का, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ गैस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पिस्टन मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर. Okay, whatever the force exerted by the gas when the gas is expand is exactly equal to area of the piston. area of the piston क्या है? कैपिटल A multiplied by pressure, that is P. Understood? Multiplied by pressure, that is P. Okay, this pressure is equal to magnitude and opposite in sign to the external atmospheric pressure. Okay, this pressure is equal to what? Magnitude, same magnitude में है but opposite in sign to the external atmospheric pressure that oppose the movement and has its value minus PEXT. Understood? So whatever the pressure is there, that is minus EXT. So thus हम लोग कहेंगे whatever the force applied by what? By the gas to move the piston is nothing but minus PEXT. EXT है ना external actually into A, that is A is a cross section area, because pressure क्या है? Pressure is force applied per unit area. Okay, P is equal to F by A. So but obvious F is equal to P into A, but here the negative sign is written. Understood? As the pressure opposing the moment of the piston over here. This is our equation 1.
ओके, आगे बढ़ते हैं. P is external atmospheric pressure. If piston moves to a distance d, as shown in the figure यहाँ पे देखो, here the piston moving up to the distance d over there. Okay, क्या है फिर? Then the amount of work done is equal to the force multiplied by distance. Understood? So we have already seen the equation in the previous video that work done is what? Force into displacement. So F is equal to force into displacement. We are having the value of force over there. फोर्स की वैल्यू है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में, देखो यहाँ पे F इज इक्वल टू माइनस पी ई एक्स टी इंटू ए. सो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, विल पुट द इक्वेशन 1 into equation 2 over there, we'll get the equation 3, that is W is equal to minus PEXT into A into D. Understood? Where W is वो तो है work done, pressure that is PEXT is the pressure, A क्या है area of cross section and D is the displacement. Okay, अब this A into D, the value of A into D is nothing but delta V, that is actually the change in volume. Okay, A into D क्या है, A is the area of cross section, D is what? Displacement. That actually express the change in volume of the system into the cylinder, change in volume of a gas in the cylinder from V1 to V2. See over here, again we'll see the figure. ये देखो figure. Okay, now here volume changes from V1 to V2, but obvious volume changes because of the displacement of piston, and that displacement of piston is shown by the D, and the area of cross section is of the piston is A. So A into D is nothing but delta V, that is V2 minus V1. So here it is written over there that A delta V is equal to A into D. See the equation number 4. Okay, अब we are having the value of A into D. So we'll put that equation 4 into the equation 3, then we'll get the equation 5, that W is equal to minus PEXT into delta V. Okay, W is equal to minus PEXT into delta V. Understood? In short, W is equal to minus PEXT into V2 minus V1, where V1 क्या है initial volume of the system, V2 is what? Final volume of the system. समझ गए? Okay, so this is our expression actually, W is equal to minus PEXT into delta V. This is the work done expression for isothermal irreversible process, or expression for PV work. Okay, expression for pressure volume work, where the pressure remains constant over there. Understood? So in short, that W is equal to minus P into delta V is also written as W is equal to minus PEXT into V2 minus V1, because delta V is the change in volume from initial to final. So but always final volume is greater than initial volume, V2 minus V1. Understood? Okay, chalo. One thing we need to remember about the expansion and the compression of gas. What is the sign actually of a W? See, when gas is expand, the W is negative. गैस अगर एक्सपांड होगा तो W इज़ नेगेटिव. इनफैक्ट दैट W इज इक्वल टू माइनस पी ई एक्स टी इंटू डेल्टा वी, जो फिफ्थ इक्वेशन है, इज एक्चुअली द वर्क डन फॉर द एक्सपांशन ऑफ अ गैस. अब वो क्यों होता है, एक्सपांशन है तो नेगेटिव क्यों? बिकॉज सी, इफ द गैस इज एक्सपांड, यानी क्या हुआ, द वर्क इज डन बाय सिस्टम और सराउंडिंग. किसने वर्क किया? The work is done by system on the surrounding. Okay, work is done by what? System on the surrounding. It means there is a loss of energy by the system to the surrounding, and loss of energy है तो definitely the W will be negative. Understood? On the other hand, if the gas is compressed, अगर गैस compress होता है तो W is positive. Understood? W क्या होगा? Positive होगा. कैसे W positive होगा? क्योंकि देखो, इफ़ गैस इज कॉम्प्रेस, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर कंपेयर टू द गैसियस प्रेशर, एंड पिस्टन मूविंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन इन द सिलेंडर ओनली. अंडरस्टूड? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा ऑफ द गैस. ओके, वॉल्यूम डिक्रीज तो होगा, बट देर इज अ सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी पुट इन टू द गैसियस सिस्टम बाय द सराउंडिंग. इसका मतलब ये हुआ कि द एनर्जी इज चेंजिंग or exchanging the energy from surrounding to system. Okay, energy exchanging from surrounding to system over there. Understood? And that's why it is said that the W is negative. Work is done by surrounding onto the system. So W positive होगा जब गैस का expansion होगा. It is says that system work is done by system to the surrounding, and if the gas is compressed, W is negative. It means work is done by surrounding onto the system. Understood? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए, दैट इज फ्री एक्सपांशन. सी, फ्री एक्सपांशन एक्चुअली दिस इज द वर्क डन इन वैक्यूम, व्हेन देयर इज नो एनी
some sort of external pressure over there, vacuum में work done हुआ, तो फिर क्या होगा exactly, what will be the value of W? Okay, see, a free expansion means expansion against a zero opposing force. ठीक है, the expansion of a gas against a zero opposing force, that is called the free expansion. Such expansion generally occurs in a vacuum. Understood? जहाँ पे समझो कि स्पेस में चले गया है, जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे expansion of a gas हुआ against the no opposing force over there. That work is said to be the work done in free expansion or या फिर free expansion. Okay, see, the work done by the system during such expansion is given by the equation W is equal to minus PEXT into delta V, where W is the work done, PEXT that is external pressure, and delta V is the change in volume, V2 minus V1. Correct? अब वैक्यूम है तो बट ऑब्वियस देयर इज नो एनी प्रेशर, नो सॉर्ट ऑफ अ प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इज देयर. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा इन द वैक्यूम? इट इज जीरो ना. इन वैक्यूम PEXT इज नथिंग बट दी जीरो ओवर देयर. अंडरस्टूड? अगर वैल्यू जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? हेंस W इज इक्वल टू माइनस PEXT इंटू डेल्टा V. सो पुट द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर इंटू दैट इक्वेशन. W इज इक्वल टू जीरो इंटू डेल्टा V. Therefore W is equal to 0. यानी अगर अपोजिंग फोर्स नहीं होगा, okay, in the surrounding only, we can say that no work done by the gas. Understood? No work done by the gas. Hence in the other word, no work done when the gas expand freely in the vacuum. अब work done क्यों नहीं है? Why it is not there? Because see, work यानी क्या है? Exchange of energy from system to surrounding to system. What is work? Work is nothing but the thermodynamic work is nothing but the extension of what? Exchange of energy. Generally the energy in the form of a heat from system to surrounding to system. Correct? System surrounding को देगा तो work is done by the system. अगर surrounding heat energy दे रहा है system को तो work is done by surrounding onto the system. But यहाँ पे opposing force है ही नहीं. ओके, प्रेशर है ही नहीं, सॉरी. ओके, सो क्या हो जाएगा कि मूवेबल पिस्टन तो इजीली मूव हो जाएगा बिकॉज विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी बाय द सिस्टम. okay, without any loss of energy by the system, the piston can easily move in a upward direction over there. Understood? So loss of energy not there. इसका मतलब ये हुआ हालांकि पिस्टन मूव हो भी जाएगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बट स्टिल इट इज सेड दैट द वर्क इज नॉट डन ओवर देयर बिकॉज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिस्टम एंड द सराउंडिंग ओवर देयर. अंडरस्टूड? क्योंकि वैक्यूम कंडीशन है, अपोजिंग फोर्स ही नहीं है, तो फिर वो पिस्टन को मूव पुश करने के लिए इन द अपवर्ड डायरेक्शन कुछ एनर्जी लॉस करना ही नहीं पड़ा गैस को, जो कि गैस इनक्लोज्ड है इनटू द सिलेंडर ओनली. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सिस्टम है इनक्लोज्ड इन द सिलेंडर विच इज़ प्लेस्ड इन अ वैक्यूम, तो क्या हो जाएगा कि मूवेबल पिस्टन तो है, तो पिस्टन मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन बट नो सॉर्ट ऑफ अ फोर्स शुड मीन्स गैस हैज़ टू बी अप्लाई और सिस्टम हैज़ टू बी अप्लाई टू मूव द पिस्टन इन द अपवर्ड डायरेक्शन. So no loss of energy over there. It means no work is done by the system in the vacuum. So this is called actually free expansion. Understood? So W is equal to 0. So in other word, no work is done when gas expands freely. Understood? Okay. चलो, units of energy and work. We'll see unit of energy and work क्या है exactly. 1 joule is equal to 1 kg m square s raised to minus 2, that is equal to 1 pa m cube. So 1 pa is equal to 1 kg m inverse s raised to minus 2. In the equation W is equal to minus p into delta V, if pressure is in bar and delta V is in dm cube, so actually then the work done has a unit of bar dm cube. Okay, work done का unit क्या है? bar dm cube. And see at the last 1 bar dm cube is equal to 100 joule. ओके, 1 बार डी एम क्यूब इज इक्वल टू 100 जूल. बच्चों हम लोग सम करेंगे वहाँ पे वी नीड टू रिमेंबर दिस रिलेशनशिप. 1 डी एम क्यूब बार इज इक्वल टू एग्जैक्टली 100 जूल, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में लेंगे कैलकुलेट द वर्क डन इन डी एम क्यूब बार एंड ऑल्सो इन जूल. ओके, सो ये प्लीज़ याद रख लेना कि दैट 1 डी एम क्यूब बार इज इक्वल टू 100 जूल. डोंट ये पूरा बाय हार्ट मत करना, जस्ट आज का जो बोल्ड फॉर्म में है वही आप अच्छे से ये कर लेना. एंड द नॉर्मल यूनिट और वॉट एवर रेगुलर प्रैक्टिस में हम लोग यूज़ करेंगे फॉर द वर्क इज़ बार पर डी एम क्यूब. ओके, बार डी एम क्यूब, सॉरी नॉट पर डी एम क्यूब, बार डी एम क्यूब. अंडरस्टूड? थैंक यू.